Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Osama Shah. Starting this bulletin is an unmissable and unprecedented interview. Bihar's blockbuster beta, Tej Pratap Yadav, he has spoken out for the first time since the family drama that gripped the state. From Pyar and Parivar to his relationship with his father, Lalu Prasad Yadav, and the intricate world of politics, he has revealed it all in this exclusive and candid conversation with NDTV's Manoranjan Bharti. Take a look. अभी आपकी स्थिति क्या है पार्टी में और अब चुनाव होने वाले हैं? देखिए, चुनाव होने वाले हैं, अच्छी बात है। एज आ हम विधायक हैं, अभी हसनपुर से विधायक हैं, तो हमारा दौरा लगेगा क्षेत्र में और हम घूमेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे और जो भी समस्या होगा, अभी देखे होंगे कि अभी हमने एक पोस्ट किया, आज हमने ट्वीट किया था, जनता दरबार। तो जनता दरबार के माध्यम से समस्या को हम सुनने का काम करेंगे। और दो चीज़ का फ़र्क होता है। एक होता है कि जैसे आवास में लोग, बड़े बड़े नेता लोग भी होते हैं, अपने आवास में लोगों से मिलते हैं और जनता दरबार जैसी कार्यक्रम को लगाने का काम करते हैं कि उनकी समस्याओं को सुने और उसका ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा हो। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम 30 तारीख से अपना जनता दरबार, अपने आवास यहीं 26M स्टैंड रोड पे, सभी लोगों का हम समस्या। अभी आरजेडी में है ना, आप तो है ना, कोई पद नहीं है भले। नहीं, देखिए 6 साल के लिए संगठन से हम बाहर हैं। हाँ। 6 साल के लिए हम तो संगठन से बाहर हो गए। लेकिन बाहर रहते हुए इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी को घर में पैक हो जाना चाहिए। आदमी को अपना काम करना चाहिए। तो हम अपने तरीके से यात्रा लगाएंगे और काम करेंगे। उस दिन को आप याद करें जब आपको निष्कासित किया गया, आपके मन में क्या आया वो बताइए जरा सा। जब आपको निकाला गया पार्टी से, आपको कैसा महसूस हुआ वो बताइए। खराब तो लगा। पार्टी से अगर निकाला जाता है किसी को भी, या कोई नौकरी पर रहता है, या किसी स्टाफ को आपने हायर किया, कोई एम्प्लॉय को आपने अगर हायर किया है, अगर उसको आप किन्हीं के बात में आ करके उसको निष्कासित करते हैं, तो ये तो गलत बात है। और थोड़ा दुख होता है लोगों को। तो खैर इन चीज़ों पे मैं, और निष्कासित करने वाला यदि पिता हो तो, यदि पिता हो निष्कासित करने वाला, देखिए पिता को हम अपने सर आंखों पे मानते हैं। हमारे माता पिता सर्वोपरि हैं। सबसे अगर अहम भूमिका है तो मैं अपने पिता को और माता को देने का काम करता हूँ। वो हमारे लिए आज भी आदरणीय है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे भगवान हैं। और ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ रहता हूँ तो उधर मेरी माँ को चिंता नहीं रहती है। चिंता लगातार रहती है। और सबसे पहले प्रथम पुत्र होने के नाते माता पिता हमको अपने दिल में रखते हैं, ये हम पूरे तरीके से जानते हैं। लेकिन जो सिचुएशन बना, क्या ये सिचुएशन थी, नहीं सिचुएशन थी, उन चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहते कि वो पॉलिटिकल है पूरे तरीके से। और हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी को पूरा आशीर्वाद है, मुख्यमंत्री बने, पूरा सपोर्ट है उनको, कोई दिक्कत नहीं। दोनों भाई के रिश्ते कैसे हैं अभी देखिए सिचुएशन है, थोड़ा सा उथल पुथल है, लेकिन सिचुएशन को हम संभालने का काम कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं पूरे तरीके से। हमको रिश्ता खराब करने में कोई दिलचस्पी ये नहीं है। रिश्ता हमको खराब नहीं करना है किसी से भी, चाहे कोई घर का सदस्य हो। वो हम किसी से रिलेशन नहीं खराब करते हैं। हम रिलेशन अच्छे से बना के रखने का काम करते हैं। मतलब आप बड़े भाई का फर्ज निभाते हैं हमेशा से? बड़े भाई का फर्ज, अगर बड़े भाई आप हैं तो बड़े भाई का फर्ज निभाना पड़ेगा ना। बहुत लोग, आपके विपक्षी लोग जो आपके की कंट्रोवर्सी हुई है उसका मुद्दा बना रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे जो है कहीं आरजेडी को नुकसान ना हो जाए पॉलिटिकली। देखिए आरजेडी को क्या नुकसान होगा, नहीं नुकसान होगा, केवल हम ही से नुकसान होता है आरजेडी को, और लोगों से नुकसान नहीं होगा। और भी तो लोग हैं, बहुत सारे लोग। स्पेशली हमको क्यों टारगेट किया गया? स्पेशली सब हमको टारगेट करते हैं लोग। मैं अपने परिवार पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार पे, भाई पे, बहन पे, माता पे, पिता पे, मैं किसी पे नहीं जाना चाहता हूँ। और लोग जो हैं, जो टारगेट किए हुए रहते हैं लगातार हम ही को, और लोग जो हैं वो केवल इसलिए टारगेट करते हैं कि उस समझ जानते हैं कि दूसरा लालू यादव यही है।
आवाज वही निकलता है, ठेठ अंदाज, जमीन से जुड़े हुए। कई एक लोगों ने कहा है, ये बात अच्छी है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने हैं, हमारी पूरी सपोर्ट है उनको। हम किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते हैं, हम किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों को खटकता है कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जमीन का मसला को उठाने का काम करता है। जमीन का धरातल जो मुद्दा होता है पब्लिक के बीच में मुंह तोड़ होकर के जवाब देने का काम करता है, किसी से डरता नहीं है। तो हमारे पिताजी का वही अंदाज रहा है, तो जब हमारे पिताजी का वो अंदाज रहा है तो पुत्र का भी वही अंदाज होना चाहिए, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होना चाहिए। इतने देर तक आपके साथ बातचीत करने के बाद मुझे इतना तो मैं कह सकता हूँ, मुझे लगा कि तेज प्रताप के दिल में थोड़ा दर्द है। दर्द? हाँ, दर्द है, थोड़ा दर्द है थोड़ा। इतना ये सब जो एपिसोड हुआ है उससे थोड़े मायूस तो हैं। हम मायूस नहीं होते हैं। नहीं है। अब हम ही मायूस हो जाएंगे तो फिर जनता का क्या होगा? हम जब मायूस हो जाएंगे, सुन लीजिए बिहार की तमाम जनता, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना, कोई मायूस मत होइए। जो हमारे फैन फॉलोवर्स हैं, जो हमको तेजू भैया बोलते हैं, मायूस मत होइए, बहुत जल्द आपके बीच में हम आने जा रहे हैं। तो लगता है आप उसी काम में आगे बढ़ रहे हैं। अब उसी काम में आगे बढ़ना है, निकलना है जनता के बीच में। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी, आपकी पूरी टीम को, दिल्ली से आप लोग यहाँ हैं, सबको धन्यवाद, स्टूडियो के सभी लोगों को धन्यवाद। Well, another big story that we are tracking at this hour is that the RSS has renewed its call to remove the words secular and socialist from the preamble of the Indian Constitution. The RSS General Secretary Dattare Hosable, he stated that these terms were inserted during the emergency period in 1976 without wider public consent and therefore should be removed. Listen in. इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के। सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है, चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए। तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। The 26th of June 2025. This date marks a truly historic moment in space exploration as Shubhanshu Shukla with his team successfully entered the International Space Station. He was met with hugs, handshakes and high fives from the current ISS crew. The team's grand entry, it signals a new era of collaboration and achievement. They were witnessing the smiles and excitement as Team Shukla begins their mission, making India's presence felt in the happy confines of our orbiting space station. तो हम लॉन्च कर रहे थे तो मेरे स्पेस सूट पे तिरंगा मेरे शोल्डर्स पे था। Floating into the space station, stepping into history and legend. Air Force pilot Shubhanshu Shukla wrote a historic new chapter in the country's space exploration story as he became the first Indian to float into the International Space Station. Gleaming with big smiles, Shubhanshu and his team of 4 astronauts entered the space station at about 6 p.m. Indian time after a 28-hour journey into space. Axiom 4's journey began at 12:01 p.m. on Wednesday, when SpaceX's Falcon 9 rocket blasted off from Launch Complex 39A at the Kennedy Space Center in the United States. The 4-member crew were greeted by the existing 7-member crew at the International Space Station with big smiles, hugs, and welcome drinks.
So I am number 634. That's a privilege. No, but to be fair, it is a privilege to be amongst the few who have got the chance to see the Earth from a vantage point that I have been able to see now. It has been a wonderful ride. It has been great, and I was looking forward to come to space. It is something to look forward to as such. But the minute I entered the International Space Station and you guys, this crew, you just made me feel so welcome, as if you literally opened your doors, like your house doors for us. That's true. So, but it was fantastic. I feel even better. Whatever expectation I had of coming here, they were surpassed by the view. Of course, that's the big part of it, but by you guys as well. So thank you so much. I think this was fantastic. This is wonderful, and I'm very, very confident that the next 14 days are going to be amazing, doing, as you said, advancing science and research and working together. Thank you so much. The four then lined up for a photo op drinking liquids from a foil packet. Together, they all now make the Space 11 at the International Space Station. Earlier in the day, the capsule carrying the four astronauts docked at the space station at about 4 p.m. The fascinating process of docking and the crew entering the space station was beamed live across the world. Shukla's proud parents watched their son write history with tears in their eyes, prayers on their lips, and pride in their heart. अब ये अंदर चले गए, अब कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब कोई दिक्कत नहीं है, बेहद खुश है। अब 14 दिन बाद उनका इंतजार रहेगा वापसी का। 14 वापसी का इंतजार रहेगा कि जल्दी से आए, जल्दी से मिले आके हम लोगों से। ये बहुत ही अहम पड़ाव था, उसके लिए उसने जो है अच्छी तरह उसने मेहनत करके जो भी सक्सेस प्राप्त की है, उसके लिए हम बहुत खुश हैं और बच्चे पर गर्व है, हमें पूरा अपने बच्चे पर गर्व है। The International Space Station will now be Shukla & Co.'s home for the next 14 days, where they will conduct experiments before returning to Earth. Astronaut Group Captain Subhanshu Shukla created history for India, becoming the first Indian to visit the International Space Station. After a long journey, he will now spend 14 days at the International Space Station, conducting several experiments. But this is really the beginning of the Indo-US partnership in space. Beyond this, coming up is the NASA ISRO Synthetic Aperture Radar Satellite, the world's single most expensive Earth imaging satellite ever made. India and America exploring space together. And Group Captain Subhanshu Shukla lays the first firm steps for India's Gaganyaan program. With Vishnu Som in New Delhi, Pallav Bagla for NDTV. Well, to talk about this absolutely historic moment for India and Subhanshu Shukla, I'm joined by a space flight specialist and with research and operational experience, Mr. Simon Evett. Simon, welcome to NDTV. Firstly, how ambitious is a mission like this, especially for a country like India, which has such huge ambitions when it comes to space exploration, when it comes to developing its own space program, sending an Indian to the moon? This is possibly the first step towards it, isn't it? I think that's pretty key what you just said. It is the first step. Human spaceflight programs are incredibly complex. They're lengthy, they take a lot of resources, and with the way that technology has developed, the modern new space era and how things are being done now is very different to, say, 40 years ago when the first Indian went into space. So understanding how to do human spaceflight, how to be involved, the international collaborations that are required, the government commercial relationships that are required, these are all steps that this particular mission is enabling. And it's allowing that start to Gaganyaan to be seen internationally and providing a degree of confidence, I think, within India that we've started this process now. We're going all the way, as you just said there, we're going all the way to the moon, and this is the start. Yeah. So it's pretty significant. You know, this comes on the back of the success of the Chandrayaan mission. And of course, many countries are collaborating, which is what it should be. But when you look at it in isolation, where do you feel India stands at the moment, Simon?
Well, if you look at the space sector broadly, India is a power player. As you just said, India has been to the moon, and so few countries have done that. I look at the space sector slightly differently. I'm a human spaceflight specialist, so I look at the human spaceflight program. So there is where India, I believe, is starting to make big gains and gain traction, and this is a good example of that traction. Where it can be in the vanguard of the field, human spaceflight, as it moves forward, because it's got the strength, it's got the capabilities, the foundations, if you like, to do that. So I'm really pleased to see that India is now taking these steps forward, because I'm quite sure that you can go all the way. Simon, finally, what are the key lessons or best practices can India draw from this mission, especially in order to increase and strengthen our Gaganyaan mission, which we have set our eyes on? What can we as a country draw from this experience? I think one of the things that India needs to understand is, so this is a short duration mission. It's a commercial mission. A certain amount of preparation and selection of the individuals was required. But what you have to look at when you've got a human spaceflight program that is a significant program, such as the one India intends, those individuals will be career astronauts. They will be decades going through these difficult and stressful missions. And so the selection of those individuals is going to be key. The selection program needs to be detailed, it needs to be appropriate, and I'm sure it will be, so that the cream of Indian society are found for those astronaut positions as the program develops and moves forward. All right, Simon Evett, thank you very much for speaking with NDTV and sharing your views on this historic moment, not just for India, but for the entire world. Time now for a very short break. More news and updates on the other side. Sending a stern message, the Defence Minister Rajnath Singh, he has refused to sign a joint statement at the Shanghai Cooperation Organization meet because it did not mention the Pahalgam terror attack, which claimed 26 innocent lives and did not reflect India's strong position on terror. While skipping any mention of Pahalgam, the document mentioned Balochistan, tactically accusing India of creating unrest there. It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. The Defence Ministers' meeting has concluded. I understand that they could not adopt a joint statement. I also understand that certain member countries could not reach consensus on certain issues, and hence the document could not be finalized. On our side, India wanted concerns on terrorism reflected in the document, which was not acceptable to one particular country, and therefore the statement was not adopted. Raksha Mantri, in his articulation and in his address, called upon the SCO member countries to come together, unite to fight terrorism in all its forms and manifestations. He also reiterated the need to uphold the perpetrators, organizers, financiers, sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism. They to be held accountable and bring them to justice. The Pentagon has released an official video of the United States aircrafts destroying the Iranian nuclear sites. The Pentagon has confirmed that the B-2 bomber's bunker buster destroyed 3 Iranian nuclear sites, including Fordo, Natanz, as well as Isfahan. The official video shows the destruction of the Iranian nuclear facilities. Remember, the US unleashed bunker buster on Iran's nuclear program.